हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ल्यूकोनिया से रिलेटेड चैप्टर्स के। ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू विच क्लास? कैलकेरिया। ल्यूकोसोलेनिया कैलकेरिया क्लास से बिलोंग करता है। द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलेनिया आर पिनकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोनिया क्या क्या हैं? पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट्स एंड अमीबोसाइट। दीज आर प्रेजेंट इन ल्यूकोसोलेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया। एस्कोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलेनिया में मिलता है। यह सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है। इट इज़ फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया एंड ऑर्डर होमोसीला। इन दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑस्टिया आर प्रेजेंट ऑन द surface of the body and connected to the spongocoel. It is lined by flagellated conocyte cells. Spongocoel opens to the outside through osculum, which is located at the distal free end of the sponge body. So water enters through ostia into the spongocoel and excrete out through the osculum. Next, in xylem, in cycon, which type of canal system is found as cycon type? As we can see in this diagram, cycon type canal system. Outgoing water through osculum, dermal ostia, prosopyle, coinocytes, radial canal, apopyle, incurrent canal, ingesting water. In cyclone type of canal system found in cyclonoid canal system, this type of canal system develops from asconoid type due to horizontal folding of asconoid body wall. The spongocoel is lined by pinacoderm and these are restricted to small chambers. Incurrent canals are also there. Incurrent canals open into radial chamber through prosopyle and radial chamber opens into spongocoel through apopyle. Spongocoel is very narrow and opens to outside through osculum. Next question, the flow of water. The flow of water in cyclone type of canal is in following sequence: dermal ostia, prosopyle, apopyle, then osculum. Next question, the hollow blastula of cycon is, किस तरह का ब्लास्टुला होता है साइकन में? एम्फी ब्लास्टुला. कॉइनोसाइट्स आर फाउंड इन, कॉइनोसाइट किस में मिलती है? साइकोन में. स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन साइकोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन इन साइकोन टेक्स प्लेस विद इन कॉइनोसाइट्स. कॉइनोसाइट्स में फर्टिलाइजेशन होता है. साइकोन इज अ बाइसेक्सुअल और मोनोशियस स्पॉन्ज बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज ए rule because of protogamy. Special sex organs are not found, but the sperms and the ova are found in mesenchyme. Undifferentiated amoebocytes called archaeocytes or coinocytes act as a sperm mother cell and ova mother cell. This fertilization in cyclone takes place within coinocytes. Olianthus stage is seen in the development of cyclone. The Olianthus is the simplest known type of sponge. As it has the simplest type of canal system, it occurs as a transitory stage in the life history of all calcareous cyclonoid sponge. In cyclonoid sponge, gastrula swims and settles on a rock with blastopore against the rock and grows to form Olynthus stage and look like a little sponge. Coral reefs are formed by coelentrates, a radially symmetrical invertebrate animal with differentiation of tissue only will be placed in Nidaria. Next, which of the following is a coelenterate? Sea fan. Sea fan is a coelenterate. Next question, match list first, match second and select the correct answer from the code given below the list. Answer A. पैलियम को मेसेल कहते हैं. रोपेलियम ओबेलिया में प्रेजेंट होता है. नियोपैलियम मैमल में. नियोप्लाइना में मोनोप्लेकोफोरा. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिक्विड पैलियम मसिल में होता है. रोपेलियम ओबेलिया में होता है. नियोपैलियम मैमल्स में होता है. नियोप्लाइना मोनोप्लेकोफोरा. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडेम्सिया एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द आंसर कोड. इट इज़ अ पैरासाइट.
Answer is B. Second and third are correct. It is an example of commensalism adamsia. It is called sea anemone. Next question. Scientific name of sea fur is Obelia geniculata. Sorry, sea fur का scientific name है Obelia geniculata. Marine hydrozoan. They belong to the Cnidaria phylum and have the polyp and medulla stage in their life cycle. Which of the following animals is pelagic? D. Both B and C, Noctiluca and Physalia. The pelagic zone consists of the water column of the open ocean and can be further divided into regions by depth. The pelagic zone can be thought of as an imaginary cylinder or a water column between the surface of the sea and the bottom. Pelagic zone ecological realm that includes the entire ocean water column. Noctiluca and Physalia are found in pelagic zone. एनिमल्स इन प्लेजिक मीन्स फ्रीली स्विमिंग एनिमल्स को हम प्लेजिक कहते हैं. फाइसिलिया एंड नॉक्टिलिका इसके एग्जाम्पल हैं. द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मूंगा इज. साइंटिफिक नेम क्या है? कोरेलियम रूब्रम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ? लगून्स आर नॉट कोरल रीफ. अटॉल, फ्रिंजिक लीफ, पेरिस, दीज ऑल आर द कोरल रीफ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग feathers applies metridium? D. It has no skeleton. There is no skeleton in anemone. The anemone belong to the class Anthozoa or Actinozoa. It is dioecious animal. There are two type of mesenteries. There are 8 pair of mesenteries. Metridium is also commonly called sea anemone or plumose anemone. Valerium is a structure associated with Aurelia and unlike true velum of the hydrozoan medusa, it contains endodermal cell. Which of the following set of individual of the phylum Coelenterata belonging to subclass Hexacolina of the class Actinozoa? Answer is Atricina, Zoanthus, Advarsia. Which of the following of individual of the phylum Coelenterata belong to subclass Hexacordia of the class subclass Hexacorilla or class है Actinozoa? Articina, Zoanthus and Adversia. Next question. Which of the following corals is the example of solitary coral? Fungia. Fungia is the example of solitary coral. Fungi are commonly called mushroom coral. It is a big solitary coral. Madrina is called brain coral. Millipora is hydroid colony that is abundantly associated with coral reef. Common name of Fungia is mushroom coral. Diploblastic acoelomate condition is found in sea anemone. Diploblastic acoelomate. Acoelomate platyhelminthes. Triploblastic stage of organization in the animal kingdom begins from helminthes. Triploblastic helminthes से शुरू होती है. Nematocysts are present in which of the following phylum? Coelenterata में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट रहते हैं. इस डायग्राम में हम निमेटोसिस्ट को देख सकते हैं. स्टाइलेट, ओपरकुलम, स्पाइंस, माइटोकॉन्ड्रिया, निमेटोसिस्ट, कैप्सूल, न्यूक्लियस, coiled tube. Nematocysts are found in Coelenterata. Which one of the following is called dead man's finger? Alcyonium. Which one of the following is non-parasitic animal? Sea anemone is an non-parasitic animal. Next question. Consider the following statement. Alternation of generation occur in coelenterates. Sporophyte and gametophyte stages replace each other. Answer is B. Both A and B, R are true, but R is not the correct explanation of A. Alternation of generation occur in coelenterate. Yes. Sporophyte and gametophytic stage replace each other. Yes. Next, the feeding zooids of Obelia are known as. feeding वाले को हम polyp कहते हैं. Polyps are feeding zooids of Obelia. Blastostyle is the reproductive zooids of colony.
The blastocell bilateral and asexual budding reproduce the sexual individual called medusa or gonophore. Gonotheca and blastocell collectively called gonengium. A coral reef lying close to the shore of other volcanic island is known as fringing reef. Fringing reef किसे कहेंगे? अगर कोरल रीफ वॉल्केनिक आइलैंड के किनारे पर बनती है। निडेरियंस किस तरह के होते हैं? आसिलोमेट। निडेरियंस आसिलोमेट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, निडेरियंस आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, they are oscillomate. Next question. Polymorphism is very common among the hydrogens and coelanthrates. Polymorphism is the outcome of division of labor. Answer is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Polymorphism क्यों होता है? It is the outcome of division of labor. Polymorphism is the outcome of division of labor. Next question. Coelanthrates having more than 3 types of individuals. They are called polymorphic. Hydractinia, gastrozoites for feeding, spiral dactylozoites for protection, long tetraclozoids have sensory function. Which of the following does not belong to phylum Coelenterata? C. Cucumbers Coelenterata से belong नहीं करता है। यह एक इकाइनोडर्म है। व्हाट इज अ निमोटोसिस्ट? सी, पार्ट ऑफ ए सेल। निमेटोसिस्ट क्या है? एक सेल का पार्ट है। इट इज कॉल्ड द निडोसाइट दैट हेल्प इन कैप्चरिंग द प्रे एंड डिफेंस। सो द करेक्ट आंसर इज पार्ट ऑफ ए सेल। मेडुसा ऑफ ओवेलिया डिफर्स फ्रॉम ऑरेलिया in having ropelium. The medusa from the aurelia has ropelium, which is a light and gravity sensing organ. Ropelium is absent in the medusa of ovelia. नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रा चैप्टर से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बडिंग इज कॉमनली फाउंड? बडिंग किस में मिलती है? हाइड्रा में। द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी ज़ूक्लूरला। द फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से गोनाड का फॉर्मेशन होता है हाइड्रा में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्री लिविंग लार्वा ऑफ हाइड्रा? हाइड्रा के फ्री लिविंग लार्वा का नाम है प्लेनुला। टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर 8। हाइड्रा में 8 टेंटिकल्स होते हैं। गोनेड्स इन हाइड्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। गोनेड एक्टोडर्म से। द गोनेड इन हाइड्रा डेवलप फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म इज द आउटर लेयर ऑफ द गोनेड्स which accumulates to form bulges in the body wall. Regeneration in hydra occurs by morpholepsis. Regeneration in hydra occurs by morpholepsis. If a living hydra animal is cut into 2, 3 or more pieces, each missing part grows and becomes complete animal. Next question. The body organization is हाइड्रा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड इन फाइलम आर गिवन बिलो। आसेलुलर ग्रेड प्रोटोजोआ में, सेलुलर ग्रेड पॉरीफेरा में, टिश्यू ग्रेड हाइड्रा में, ऑर्गन ग्रेड प्लेटी हेल्मिंथीज में। ग्लूटेथियोन इज सिक्रेटेड बाय डेफनिया। हाइड्रा इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म विच हैव द नर्वस सिस्टम एंड हैव सेंसर्स विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ देयर प्रे। When the prey moves, this causes the activation of the stinging cells. These cells release mechanosensory discharge called the nematocyst, which gets inserted into the prey. The injured prey release glutathione in the fluid. The glutathione can be detected by the sensors present in the mouth region of the hydra. This detection causes the tentacles to hold the prey and bring it towards the mouth. Daphnia is the prey of hydra, so glutathione is secreted by daphnia. The gastrula of hydra is known as stereogastrula because it is solid. In hydra, after fertilization, the zygote undergoes complete cleavage and a hollow blastula is formed which changes into solid stereogastrula, whose ectodermal cells require cilia. This stereogastrula changes into free-swimming planula larva. Planula attaches itself to the hard substrate and transformed into the young hydra.
through metamorphosis. Poisonous fluid present in nematocyst of hydra is hypnotoxin. नेमेटोसिस्ट हाइड्रा के नेमेटोसिस्ट में हिप्नोटॉक्सिन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Poisonous substance found in nematocyst of hydra is hypnotoxin. Hypnotoxin is poisonous substance provided by nematocyst. Which of the following animals has a nervous system but no brain? Hydra. Hydra में nervous system होता है पर brain नहीं होता है. Hydra can digest all types of food except. Hydra सभी digest कर सकता है except starch के. Hydra can digest protein, fat and some carbohydrate but it does not digest starch because they lack salivary amylase and pancreatic amylase. So the correct answer is starch. Which cells in Hydra are called embryonic reserve? Interstitial cells are called embryonic reserve. Axon of Hydra are naked. Hydra के axon naked होते हैं. Just outside the muscular layer there is a nerve net made up of non-polarized nerve cell and their nutrients in the depth of the epidermis. Next, in Aurelia, the exhalent water current return through pre-radial and interradial. In Aurelia, the exhalent water current returns through pre-radial and interradial. Aurelia is the most common largest jellyfish. It occurs in the warm and temperate seas and lives in coastal waters singly or in large schooling fish. In Aurelia, the exhalent water current returns through paradial and interradial. There are four major body axes known as paradi. The four interradi are placed exactly midway between two paradi. Between each paradi and interradi there is adredi. Paradi, interradi and adredi together form the radial canal which originate from the gastric pouch and join the circular or ring canal. Next, a valerium of Aurelia is unlike true vellum of Hydrozoans medusa, it contains endodermal cells. Valerium of Aurelia has endodermal cells. Next question. Rhopalium of Aurelia is also called as tentaculocyst. Rhopalium को tentaculocyst भी कहते हैं. As we can see in this diagram, in Aurelia, rhopalium is a complex structure of 4 sense organs. In Aurelia, the rhopalium is a complex structure of 4 sensory organs attached to the tentaculocyst. Each rhopalium contains a stetocyst for gravity detection, mechanoreceptor, chemoreceptor, and an ocellus for photoreception. Aphyra larva is the life cycle of Aurelia. Aurelia is a cylindrical commonly known as jellyfish. Jellyfish में aphyra larva होता है. Planula, Scyphistoma, Hydratoba, Aphyra. Planula larva found in the life cycle of ओबेलिया. एफायरा होता है ऑरेलिया में और प्लेनुला होता है ओबेलिया में. एफायरा इज द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ. एफायरा किसका लार्वा है? फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ ऑरेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ रेडियल कैनाल्स इन ऑरेलिया ऑरिटा इज 16. रेडियल कैनाल 16 होती हैं. एफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ. किस में होता है एफायरा लार्वा? ऑरेलिया में एफायरा लार्वा होता है. थैंक यू फ्रेंड्स. इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.